Next, we have exercise 15.2 where we are to do linear graphs. So now we'll do linear graph. Previously, we have done line graph. So what are the linear graphs? When you plot the numbers, as you have done the previous questions, जहाँ पे आपने लाइन ग्राफ ड्रॉ किया था, तो लाइन ग्राफ में क्या होता है कि आप नंबर्स को प्लॉट करते हो, ठीक है, एंड यू जॉइन इट, देन दिस इज कॉल्ड लाइन ग्राफ, ठीक है. बट व्हाट इज द लीनियर ग्राफ? When you plot the numbers and you find that all of the points lie in a single line, कि जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ. अनब्रोकन लाइन को, जहां पर आप लाइन ग्राफ बनाते हैं और आपको अनब्रोकन लाइन मिलती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ. सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस, हाउ टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स. So here, exercise 15.2, question number 1 is, in first question you are to plot the numbers on a graph paper and you are to verify whether they lie on a line or not. So in A part you have given some points. See, you have given 40, 42, 46, 42.5. So what you will do here, on graph paper, first of all you will take two x's, that is x and y. You will take the numbers on that, like 4 is the maximum, so you, or 6 is the maximum, you can go from 1 to 6, 1 at the equal distance, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly here, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? So the first number is A40. As we know that first number shows x, second number shows y. So first it's 40. So x पे आप लोगे 4, y पे 0. अब 0 तो यहीं पे है y का, that means you will take this point, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है. जब y 0 है तो मतलब आप ऊपर जा ही नहीं सकते किसी पॉइंट पे, दिस इज द 0 पॉइंट, तो आप यहां से 0 लेंगे और x से 4, so this point is A40. Next, it's 4,2, x4, y2, B4, 2, 4, 6, C. Just move to 6. x4, x तो 4 ही रहेगा and y आप 6 ले लीजिए. C4, 6 and D is 4, 2.5. x4 or y 2.5 you will get from between 2 and 3. This point is D 4, 2.5. ठीक है, you have plotted the numbers now. अब आपको चेक करना है कि क्या ये एक लाइन पे लाइक करते हैं या नहीं, तो आप इसके लिए सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे. Join all the points, you will get a single line. So you will mention yes, all the points lie on a single line, lie on a line, you can say, right? So like this you are to plot the numbers, and if they lie on a line then we know that it's a linear graph. ठीक है, इसी को लीनियर बोलते हैं अगर सभी पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो. then the graph is called the linear graph. कहीं पे भी unbroken line now. So now here they have asked that whether the points lie on a line or not. So yes, they lie on a line. Let's try one more for this second one. For this, the second is again the same, x, y, ठीक है. So it's 1, 2, 3, 4, 5. You have to take the equal gap here. आपको gap बिल्कुल equal लेना है.
ठीक है, then the first point is P11. So x is 1, y is 1, this point P1 comma 1. Next is 4 comma 2, x4, y2, 2 comma 2, sorry, q is 2 comma 2, x2, y2, q 2 comma 2, r3 comma 3, x3, y3, r3 comma 3. Then s4 comma 4, s4 and 4, so that is this point. ठीक है, अब इनको आप ज्वाइन करोगे, so you will get that they lie on a single line. ये भी एक straight line में आ रहे हैं, so yes, they lie on a line. Now let's move to the third one. In third one we have, first point we have given here 2 3, 2 3 point, so x2 y3 नेम भी दे देना इन पॉइंट्स को, like k2 3, then 5 3, this point 5 3, then 5 5, this point is 5 5, and then 2 5, x2 y5, this point. So if you join these 4 points, you will not get a line, so we'll say that no, they don't lie on a line. So this was the first question where you were to plot the points and you were to give the names to the points, right? Now second question is, draw the line passing through 2 3 3 2 and find the coordinates of the points at which this line meets the x-axis and y-axis. आपको दो पॉइंट को ज्वाइन करना है 2 3 एंड 3 2. उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करनी है कि जो लाइन आपके पास आएगी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ मीट करती है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you will draw the x's, x and y. Let's take the number 1 2 3 4 5 and 6 at the equal gap 2 3 4 5 and 6. The first number is you are to plot, that is 2 3, x2 y3, this point. You can give the name as a b also, 2 comma 3. Another point is 3 comma 2, that is x3 y2, this point is 3 comma 2. ठीक है, अब आपको इसको ज्वाइन करना है. ज्वाइन करने के बाद आपको उसको एक्सटेंड भी करना है, क्योंकि इसमें मेंशन है कि आपको बताना है कि जो ये लाइन आती है, दिस लाइन, ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कहाँ मीट करती है. तो आप क्या करोगे, इसको एक्सटेंड कर दोगे ऐसे, लाइक दिस. तो ये कहाँ मीट कर रही है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, 5 पे. तो आपको वो पॉइंट्स बताने हैं. देखो एक्स एक्सिस पे ये कहाँ मीट कर रही है, 5 कोमा 0, क्योंकि यहाँ पे y 0 है. यू कैन सी y यहाँ पर 0 है, 0 कोमा 0, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, जहां पर x भी 0 होता है और y भी. अगर आप लेफ्ट साइड ऐसे हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो x y 0, और अगर आप ऊपर देखते हैं y पे तो x 0. तो जो x एक्सिस पे 5 पॉइंट है, ये शो करता है कि यहाँ पे y 0 है और x 5 है. और ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा, दिस पॉइंट इज 0,5, कि x 0 है और y 5 है, क्योंकि यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं है, ओनली y की वैल्यू है. तो x 0 y 5. So we'll say that the line which we have drawn here, that the coordinates of the points, you are to tell कि किस पे लाई करते हैं, सॉरी किस x एक्सिस और y एक्सिस पे कहाँ मीट करते हैं. then you will tell the line will meet x axis at 5 0 and y axis at 0 5, right? Third question is, write the coordinates of the vertices of each of these adjoining figures. Here you have given 3 figures. You can see here कि आपको यहाँ पे figures given है.
आपको इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ए बी सी के, पी क्यू आर एस के और एल के एम के। ठीक है, पॉइंट ए, सो विच दिस पॉइंट ए रिप्रेजेंट, आपको बताना है ये ए पॉइंट कौन सा है। यू कैन सी हियर ए पॉइंट पे x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू, ये सी यू कैन सी दिस 0, y तो ऊपर जा ही नहीं रहा, सो y 0, x की वैल्यू 2, so a point हो गया 2 0, like this you are to tell all the points. So let's see b now. b कौन सा point है, x2 और y3, so it's 2 3, and c point, सी पॉइंट पे आप देखेंगे तो सी पे y की वैल्यू 3 है बट x की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, x आप यहां से चेक करेंगे, x तो 0 आ रहा है और y कितना आ रहा है, 3, तो 0,3 फर्स्ट नंबर x को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड नंबर y को। सिमिलरली यू कैन टेल अबाउट ऑल द पॉइंट्स, जैसे p 4,3, q 6,1, लाइक दिस यू कैन टेल ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, so you are to complete this question by telling the points, coordinates of the vertices, जो ये vertices हैं figures के, इनके coordinates बताने हैं, right? Then question number 4 is state whether true or false, correct that are false, आपको बताना है true or false, और जो false है उनको correct करना है। So first one is a point whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero will lie on y-axis. A point whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero. एक ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो, मतलब x 0 हो, y कोऑर्डिनेट नॉन 0 हो, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है 0, y, will lie on y axis. So yes, जब x 0 होता है तो पॉइंट किस पे लाई करता है, y एक्सिस पे। जैसे हमने c पॉइंट किया था अभी, c पॉइंट क्या था, 0,3, जहाँ पे x 0 है और y 0 नहीं है, और वो किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, a point whose y coordinate is 0 and x coordinate is 5, x 5 है, y 0 है, will lie on y axis. 5 0 देखो कहाँ लाई करेगा, ये 5 और 0, y 0 x axis पे लाई करेगा। So this statement is false because it will lie on x axis. A point जिसका y coordinate 0 है, x coordinate 5 है, तो वो कहाँ लाई करता है, x एक्सिस पे, नॉट ऑन द y एक्सिस। ठीक है, पहले तो आप कहेंगे फॉल्स, और आप करेक्ट कैसे करेंगे, इट विल लाई, 50 will lie on x axis not on y axis. The coordinates of the origin are 0 0, so yes, ये है हमारे पास origin and इसके coordinates हैं 0 0, क्योंकि इस पॉइंट पे x भी 0 होता है और y भी 0। okay, so this was exercise 15.2. complete this exercise